Oh, Ankush Jindal has come. Just trying to slash the ball very close to his body. I'm sure he is seeing the ball like a tiny blue dot. Generally, you see the batsman enjoying some fun day with seeing the ball like a huge cricket ball. आखिरी गेंद बिल्कुल बैट और स्टंप्स के ऊपर से जाके विकेट कीपर के दस्तानों में. बढ़िया ओवर फिर से निखिल गोयल का. निखिल गोयल 2 ओवर 4 विकेट और सिर्फ 6 रन देके. Has to be one of the best bowling figures of probably any of the seasons. But 4 overs bowled, just 1 over remaining for the timeout. IBM Media KVM Super Kings 11 for 5. Trying to celebrate that wicket, will have to go upstairs. A throw comes in from the offside. He's getting circulated and he's getting as a cream with a sea of players of red and black. We have our third umpire, Rehanan Zoom, who's looking very closely at the screen. We also have a LED screen to look up to at the ground. Touch and go, touch and go. Let's see. Someone says Hawa mein hai. Might have to see whether Hawa mein hai or has he dragged his bat in time. That's the question. Probably a frame back. We lost on power, but we haven't lost on confidence. We have not lost on any decisions. Umpire Jatin Arora confirms. Paji dhakka. Eh dhakka paji. Babbu veer iddaं di koi gall nahi tu na bol. But it's an absolute chaos at the moment. They are, I'm sure, not being able to just tackle the situation. What's actually happening here at the moment? The lowest score inside 5 overs, and as many wickets have gone down. 11 runs for just 6 wickets. This is going from bad to worse now for the IBM Media KVM Super Kings. The name is King, and the King has been dethroned here. On the pads, it might be trouble. Umpire Jatin Arora thinks, he might be Steve Buckner here, because Steve Buckner has been renowned as one of the slowest umpires to lift his dreaded finger. But he's not Steve Buckner. He's still talking to the player, to the bowler, because you don't see Steve Buckner generally talking to any of the bowlers when they go back to their run-up. So he's not a Steve Buckner for sure. But 11 for 6, an absolute trouble. This time goes on the back, wanting to take a run. Every ball they're playing, they try to just scrutiny of what is there from the surface. Even probably he could have, in any other day, he would have gone on the back foot to pull it towards square leg. But this time he chooses to go on the back to play. That's something comes from the short cover. Good ball again, not being able to connect. Oh, Mithun 11. They have eaten something different. Probably they haven't eaten anything from KT Sweets, our food partner. Because they have just mixed something very different in a way. They have been coming and throwing everything they have today. The red and the black. Playing a very knowledgeable cricket. Our knowledge partner is Nitish Bookshaw.
and it will be a boundary, a timely boundary, much needed boundary. After such a long time, probably after 4 overs, this boundary has come towards the third man, and Matharu built his boundary. 15 for 6 with a ball remaining, and then we'll be having a 60 seconds timeout. Our timeout partner, Gronit FX. They are dressed to the occasions at the Metron 11 event partners, Dresco, New Cloth House, and Vision Group. And all of them with their individual prizes will be eyeing on the trophy. Our trophy partner, New Friends Dhaba and Hotel. Oh, fielding placement. There was no one, a deep extra cover. He has been asked to come all the way towards the shortest of the silly point. And he was looking very silly because the point was somewhere different. But 5 overs have been bowled. It's a timeout. A timeout. Why most traders lose money. 90% of traders lose money, not because of the market, but because of their mind. The truth is, most traders fail not due to lack of knowledge, but due to lack of control. Fear makes them exit early. Greed makes them hold too long. Impulse makes them overtrade. And emotions, they cost more than losses ever will. That's why Gronit was built. To remove emotions, automate discipline, and let data do the decision-making. It doesn't panic. It doesn't chase. It just trades smart, steady, and emotionless. Upgrade your profits with Gronit's AI bot. Visit Gronit.io. Follow Gronit.io. Players to please be back at their position. We'd like to welcome Mr. Dalbir Singh ji from ITC Hotel and Resort, Chail में जो ITC Hotel and Resort है, वहाँ से मिस्टर दलबीर सिंह जी सर स्वागत करते हैं आपका फुमेरा ग्रीन्स के PL सीजन 9 के इस मुकाबले में। मयंक आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर करेंगे अपना मयंक। 17 पर 6। सुपर किंग्स बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है। यहां पर रनआउट का चांस, 9 स्ट्राइक एंड पर डायरेक्ट हिट चाहिए थी। पीछे हैं फील्डर्स 2 से कवर करने के लिए, आसानी से डॉट बॉल रहेगी। मित्रों 11 अगर अभी तक बात करें पॉइंट्स टेबल की, एक मैच खेला है वो जीते हैं, कल इनका आखिरी मैच होगा तो सिर्फ इनको जीतने ही है मैचेस। अगर आज जिस तरह से अगर हिसाब लग रहा है बड़े रेट से जीतेंगे। एक और विकेट कपिल गुप्ता के हाथों में, बेहद आसान सा कैच। गई है विकेट नंबर 7, कोई गलती नहीं की कपिल ने। बाय बाय टाटा। मास्टर कुबेर, मास्टर आदिल कहीं पे भी हैं, टेक्निकल काउंटर पे आए। कुबेर आदिल 17 for 7 as of now। 17 पर 7। हालत बद से बदतर अभी सुपर किंग्स के लिए। अमित कालिया आए और पहली गेंद निकल गई है जी। है हालांकि डीप पे फील्डर, लेग बाइस के चलते ये सिंगल। लास्ट मैच अपना खेल रहे हैं ग्रुप स्टेज का। IBM मीडिया KVM सुपर किंग्स कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रह पाए इनकी तरफ से अभी तक इस मैच में। हाँ बेहतरीन इस बार कलाइयों का उपयोग, अच्छी शॉट लगाई इस बार तुषार गोयल ने। एक और सिंगल मिल जाएगा। टोटल इज ऑन 19 नाउ। ठीक है, सबसे छोटा टोटल अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में कहें तो चलता हुआ। हाँ बल्ला घुमाया, आगे बड़े अंधाधुन हिटिंग करते हुए, कोई खास कनेक्शन नहीं। लास्ट मैच है आज के दिन का। कल हमारे दिन का जो पहला मैच होगा मित्रों 11 ही खेल रहे होंगे वहां पर। सामने उनके होंगे एस टाइटंस, फिर होगा हमारा एलिमिनेटर मैच। कैच की कॉल, लेकिन जी नहीं, चौका आखिरकार जिसके दीदार के लिए अखियां तरस गई थी वो आता हुआ। इट्स एंड ऑफ ओवर नाउ। 6 के बाद 23 पर 7। Tecnologia! 6 के बाद 23 पर 7। गेंदबाजी के लिए अब मुनीश जैन आते हुए अपना पहला ओवर करेंगे आज का।
आखिरी 24 गेंदें यहां से अब और आते हुए और 3 विकेटें जरूर, इसके बाद ऑल आउट हो सकती है सुपर किंग्स की टीम। उम्मीद रहेगी कि 24 गेंदें खेलें ही खेलें, आउट तो ना हो यहां से कम से कम। लेकिन सामने मित्रों 11 पहला मैच अपना जीत चुके हैं, चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीते और अगर ये मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाएंगे तो कल का मैच हार के फिर भी है, अगर इन केस कल सुबह हारेंगे तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अपनी आज की शाम की बहुत कन्वीनियंट बनाएंगे इसके साथ। हाँ बढ़िया गेंद, कोई मुश्किलात नहीं हुआ, आसानी से डॉट बॉल होती हुई, गेंदबाजी का स्तर बहुत अच्छा रहा। अरे जो टीम आपके सामने है काउंसिल मित्रों 11 पिछले 3 सालों से फाइनल में पहुंची है लेकिन फाइनल कभी नहीं जीत पाए। ये बड़ी बात नहीं कि हारे हैं, ज्यादा बड़ी बात है कि हर साल फाइनल में पहुंच जाते हैं। बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। कैच की कॉल लिख लीजिए, विकेट नंबर 8, छोड़ते छोड़ते पकड़ लिया है कैच। बनेगी हमारी कहानी, मेरा आप मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार एक दिन मेरी जान में दबाना, अब चल जाना ढूंढे तुझे दीवाना। नवीन पांडे कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आसानी से अपनी पहली गेंद पर उसे भेज दिया है 2 रनों के लिए। अ गुड स्टार्ट coming from Naveen Pandey. Once again we like to welcome Mr. Dalbir Singh from ITC Hotel and Resort Trail। 25 पर 8, आसानी से इस बार कहां संभाल के रखा था जिस बल्लेबाज को, क्या खूबसूरती के साथ चौका लगाते हुए नवीन पांडे। सपनों में रोज यार, आ जिंदगी में आना, अब जाने जाना। Last 2 deliveries coming up now। कोई दिक्कत नहीं, 2 गेंदें 2 चौके अब यहां से टीम को एक सम्मानजनक टोटल की ओर लेकर जा रहे हैं नवीन पांडे। आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की, क्या कोई वापसी रिडेम्पशन कमबैक कर पाएंगे मुनीश जैन या नहीं। रनअप लंबा किया अब, छोड़ दिया, ऐसे डॉट बॉल रहेगी, डॉट बॉल के साथ खत्म होगा ओवर नंबर 7। 33 for 8 after 7 now। कपिल गुप्ता ओवर नंबर 6, सामने होंगे उनके अमित कालिया। नवीन पांडे के वो 4 गेंदों में 10 रनों ने टीम को बहुत अच्छे टोटल पर पहुंचाया है, जहां लग रहा था कि शायद 20 भी नहीं बनेंगे। 33 पे आया है टोटल, इस बार जरूर शॉट बेहतर है। दूरी कितनी उसकी, बहुत बढ़िया फील्डिंग, वहां सिंगल के साथ स्ट्राइक दी है अब नवीन पांडे को, और ये रहेगा कहीं ना कहीं नवीन पांडे के साथ चलते अब, क्योंकि जब से बैटिंग पर आए काफी अंधाधुंध हिटिंग की और 2 चौके बटोरने में समर्थ भी रहे हैं। इस बार फिर से शॉट लगाते ही इसके लिए कॉल की है, रन आउट का चांस नहीं, आसानी से एक और सिंगल, 2 गेंदें 2 सिंगल्स कलेक्ट करते हुए। और यही है जी कि आपकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है यहाँ पर, उसे आप ज्यादा से ज्यादा सही रखना चाहेंगे। कैच की कॉल, जी नहीं, गेंद आसानी से निकल गई है चौके के लिए। अमित कालिया के बल्ले से जरूरी चौका।
इस बार निकल गई है गेंद पे पीछे और डायरेक्टेड होती तो शायद कुछ चांस बन जाता। फिलहाल सिंगल एक और आ जाएगा। आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की। पिछले कुछ ओवर्स में चीजें अच्छी हुई हैं जी, विकेट्स आनी रुक गई हैं जो लगातार आ रही थी। 2 गेंदें बाकी। इस बार उतना बेहतर कनेक्शन नहीं है जी, डॉट बॉल सिर्फ रहेगी है। कोशिश यहां से होगी कि हर एक गेंद पर आप वो बड़े शॉट के ले जाएंगे, कोशिश करते रहेंगे। 40 for 8 as of now. Last delivery remaining of over number 8. अबील बहुत कॉन्फिडेंट, अंपायर की उंगली खड़ी, 3 स्टंप्स के सामने पाए गए हैं। बिल्कुल लौटना होगा यहां से नवीन पांडे को। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। तुम क्या जानो सुमित सुंड आए हैं, आखिरी विकेट अब बाकी यहां से। 40 for 9। पहली बार अभी तक कोई टीम ऑल आउट हुई नहीं है वैसे फॉर्मेरा ग्रीन्स के आईपीएल सीजन नंबर 9 में। मयंक जिंदल आए हैं, 40 पर 9 आखिरी गेंद, आखिरी विकेट बाकी है, 2 ओवर्स और बचे। और ये देखिए अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को नीचे छुपा के रखा था। चौके के साथ शुरुआत इस ओवर की। आरो बिल्डर्स बाउंड्री आती हुई। ऐसा फिर से कैच की कॉल, लेकिन शॉट रही है गेंद फाइन लेग के फील्डर से। वो होंगे वहां महज एक सिंगल। स्ट्राइक अब आई है नए बल्लेबाज सुमित सुंड के पास। कैसी बल्लेबाजी करते हैं सुमित, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि गेंदबाजी अच्छी की है सुमित ने। बढ़िया सर, बैकफुट पर गए हैं, डी पे फील्डर। थ्रो कैसा है, स्टंप जरूर खिले रहे। क्या इशारा है अंपायर का, सिंगल इसे दिया है। हालांकि थ्रो बेहतर था, विकेट कीपर ने भी अपना काम कर दिया, लेकिन अगर थोड़ा और तेजी से गेंद गई होती तो शायद और चांस हो सकता था। तीन गेंदें 6 रन अभी तक। इस ओवर में आए हैं, अच्छा ओवर चाहता हुआ सुपर किंग्स के लिहाजे से। हाँ, हर गेंद पर अब कोशिश वही रहेगी जी कि अब बड़ा शॉट लगाएं, लेकिन डॉट बॉल एक बार फिर से 46 for 9। किसी तरह अगर 50-60 रन भी बना देती है तो फाइट तो कर लेगी थोड़ा बहुत सुपर किंग्स। इस बार हवा में कैच की कॉल, कोई चांस नहीं। इसी के साथ इट्स 50 अप नाउ फॉर केवीएम सुपर किंग्स। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा बस आज की। एक और इस बार फील्डर के ऊपर से निकल जाएगा। बहुत महंगा ओवर, 14 रन इससे आए और कुछ हद तक एक सम्मानजनक टोटल अब दिखता हुआ सुपर किंग्स के लिए। 54 for 9 after 9। कल हम कहाँ तुम कहाँ। विकास कपूर आए। डॉट बॉल के साथ शुरुआत, आखिरी ओवर चलता हुआ। जितने कम से कम रनों पर रोक पाए तो वही करना चाहेंगे अब यहां से मित्रों 11। और फिर जल्दी से जल्दी
इस टारगेट को चेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल निकल गई है गेंद उस सुमित के ऊपर से। चौका आता हुआ अमल, मचालो बिल्डिंग बाउंड्री। हाँ, छूटा है मौका, कैच का चांस आया था एक बार फिर से, कीपर के हाथों में वो चांस था। आज दो कुछ कैचेस छूटे दिनेश से, वरना अक्सर बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते दिनेश। सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। एक और बेहतर गेंद, डॉट बॉल सिर्फ रहेगी ये। 59 टोटल है, शायद सबसे छोटा टोटल जो इस सीजन में अभी तक देखा गया है। 59 for 9, दो गेंद इस पारी में। और काउंसिल मित्र 11 बहुत टॉप परफॉर्मेंस रहा है इस गेंद पर। रनआउट का भी चांस, लेकिन बहुत आराम से थ्रो किया जय कपिल ने कहा चाहिए कि इतने जब सब कुछ हो गया है तो एक और अगर गेंद हो जाए ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन कल एक बार फिर से मैच खेलेंगे अपना काउंसिल मित्र 11, जहां पर लायन एक्सपोर्ट ईस्ट टाइटंस के सामने होगा वो मैच। इस बार कैच की कॉल नहीं जी, नहीं बिल्कुल। मडारो बिल्डर्स बाउंड्री के साथ खत्म करेंगे इस पारी को। इट्स 64 for 9 और टारगेट रहेगा महज 65 रनों का, जब बल्लेबाजी के लिए आएगी टीम काउंसिल मित्र 11। Dot Pack Drinking Water. We are ISI registered, best in quality and supply. Contact for more details. Thank you so much, sir, for gracing the occasion. Just waiting for the photographer. There he is. And we'll be felicitating Mr. Dalbir Singh, our senior sales manager at the famous Welcome Hotel by ITC. Tavleen Chell. Yeah. Welcome Hotel by ITC Hotels at Tavleen Chell. And he'll be felicitated by Mrs. Anu Gupta from KVM AA and also by Mr. Karan Sagar from Travel with Karan. Yes, of course, the photos. Mr. Dalbir Singh, Senior Sales Manager, getting felicitated from Welcome Hotel by ITC Hotels, Tavleen Chell, by Mrs. Anu Gupta, KVM AA, and by Mr. Karan Sagar from Travel with Karan. I'm sure Mr. Dalbir Singh have enjoyed the game of cricket. Thank you so much, sir, for gracing the occasion. Call for Mr. Vansh Arora, Captain KVM Stars. Vansh Arora to please come and collect his award for Player of Match
between the match between Falcons and KVM Stars. Player of the match, Vansh Arora, the captain of his team, KVM Stars. And he'll be giving away the Man of the Match trophy from Mr. Dalbir Singh. Yeah. Well done, Vansh Arora. Well done. Congratulations, the captain, Vansh Arora, in some superb form. Thank you. Vansh, a question for you, Vansh. Yeah, cannot let you go without answering. Of course, Vansh, a terrific performance. Last moment thriller. What was going in your mind? Just make us aware of how the game presence, the game awareness of getting that important win has made you culminate into a great win today. In the toss, I already said कि could be a last game, तो खेलेंगे भी वैसे ही. So boys did really well. I am not the man of the match clearly. The man of the matches were our bowlers, Nitish bhaiya and Kunal bhaiya, even Ankur bhaiya. They bowled exceptionally well, picking us out of the danger zone. Now in the semis, we are very satisfied. And the semis is also with the champions team, Stadium Shockers. So it will be a good match. It will be a fun match. All the best for that spot, and I'm sure you'll do much more, as you have mentioned, with your whole team, and try to ring up the trophy. Thank you so much, Mr. Shanu Gupta. Thank you so much, Mr. Dalbir Singh and Mr. Karan Sagar. चौका इस बार आता हुआ यहाँ दो Back to the रन game. 2 रन कंफर्मेशन आती है बाहर की तरफ से. एक ओवर की समाप्ति के साथ इट्स 10 for 0. बाकी हैं 54 गेंदों में 55 रन जीत के लिए. दूसरे ओवर की शुरुआत 54 गेंदे 55 रन. जितना जल्दी जीतेंगे उतना ज्यादा बेहतर काउंसिल में 11 के लिए. नेट रन रेट में अपनी सुधार ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे यहाँ. इस बार बच गए हैं जी बल्लेबाज. गेंद बिल्कुल विकेट के बगल से जाती हुई. इस 10 for दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाजी के लिए, लेकिन कैच की कॉल है. कैच करेंगे तो मात दर्शक. चौका हुआ नितिन गोयल बल्ले से. दूसरी गेंद मथारू बिल्डर्स बाउंड्री आती हुई. इस बार फिर से एक और चौका. 2 गेंद 2 चौके. काउंसिल मित्रों 11 एक ऐसी टीम जिसमें बल्लेबाज ऐसे भरे हुए हैं कि ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे जी. इस बार 3 गेंदें 3 चौके. आज बल्ले से चमकते हुए नितिन गोयल. और इस बार ऑफ साइड की दिशा में स्विच आया. बल्लेबाजी ऑन ऑफ में ही खेलते जा रहे हैं. 4 गेंदें 4 मठारू बिल्डर्स बाउंड्री. आधे रन ऑलमोस्ट बनने भी वाले हैं जी. 4 चौकी अभी तक इस ओवर में. इस बार से स्वीप कर दिया आसानी से डीप में.
अब फील्डर नहीं रोक पाएंगे उसे जी। 2 रन, इसी के साथ ओवर समाप्त। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 18। इट्स 8 for 2 आफ्टर 2 overs। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ला 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 ला। एक और इस बार सुमित के बल्ले से सीधा वीआईपी लॉन्च में आता हुआ। 32 on the board now to start the third over. We have a Mataru Builders boundary. आधे बन चुके हैं, आधे बाकी, और जिस तेजी से रन आ रहे, कोई रुकावट इसमें लगने नहीं वाली है। दो में थे 2 चौके इस बार। ये नो बॉल। अंपायर रेहान अंजुम की तरफ से इशारा चेक करना चाहते हैं थर्ड अंपायर पर। क्या वो जो पिच हुई थी गेंद मैट के अंदर या मैट के बाहर? सभी की नजरें एलईडी स्क्रीन्स पर। फ्रंट एंगल पे शायद ब्लाइंड स्पॉट, लेकिन अगर मिट्टी उड़ेगी तो साफ है कि टप्पा बाहर ही है। फ्रंट के बीच में अंपायर आते हुए रेहान अंजुम। थोड़ी पोजीशन ठीक करनी होगी इनकी भी। फिलहाल नो बॉल है या नहीं? थोड़ा से फ्रंट फॉरवर्ड करके भी देखेंगे। हल्की सी मिट्टी भी उड़ी है। बहुत क्लोज ये डिसीजन रहेगा एक बार फिर से। वाइड करा दिया इसे अंपायर ने फिर। और अगली गेंद इस बार चौका। एक और लिख लीजिए, पहले वाइड उसके बाद चौका। हश्र हर गेंद का वही होने वाला है। एक और इस बार, लेकिन दूरी ज्यादा नहीं कि बाउंड्री मिल जाए। सीधा अमित कालिया के हाथों में विकेट का पतन। एक छोटी और धमाकेदार पारी खेलकर वापस चले सुमित। तेरी उम्र के नौजवानों, दिल लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। अरे झूठ भी तो कहते नहीं है, कहते नहीं है तो कोई। प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है तो कोई। Thank you, Lakshit. For loss. 41 for 1, in fact. Just lost a wicket. Sam gets an outside edge, confusion, but they will run for a single. Finally, a wicket came in after the carnage with the bat. That was Sumit Malhotra. Again, he was trying to repeat the shot to a square leg, mistimed. Kapil Gupta is the new batsman. Kapil Gupta will see this ball fly over the building. I couldn't see much. But that will be a Mataru Builders boundary to finish over number 3. And the Consul Mitron 11 are marching towards victory in very quick time. After 3 overs, it's 46 for 1. शांति 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 गाओ शांति।
was Nitin Goyal and not Kapil Gupta. So let me put the hype other ways. And Coach Jindal with the ball, and everyone are just waiting to see what happened there. They're stoned. Little surprised that because there was no movement for any of the fielders. But anyways, we have Mataru Wilder's boundary, and a 50 has also come in for the Consul Mitron 11. Just 15 required of 41 balls. This time it's Kapil Gupta. And Kapil Gupta says there is no one a deep squarely. A deep extra cover, beg your pardon. A deep extra cover. And gets a couple of runs to make the score go beyond 50. 52 for 1. And now just needing 13 of 40 deliveries. His first boundary on the outside. Trying to make some better delivery at the same angle, but this time the angle of the shot was little higher than the previous one. And 100 carrier boundaries for Kapil Gupta. Much better, but that will be a wide. Boundary and gain a boundary. So 2 boundaries away now for Consul Mitron 11 to register a victory. Fuller drive, and not much of a miscommunication there for the bat and the ball to come in, because he has done much more better. They're in the second position along with Sukhman 11, who have won 3 out of 3. And with this win, they will be there at the second position. Consul Mitron 11. Just a boundary away and just pushes. There's some talk going on between the batter and the wicket keeper. And he just softly just nudges it towards the deep extra cover. They travel with current player dugout, say 4 ho gaya. But they want to come out of the dugout very soon and go home. All smiles. It's good to see that spirit of the game alive beneath all those 4s and 6s. It reminds me of that incident between Javed Miandad and Kiran More. Kiran More kept on disturbing Javed Miandad. I'm sure many of you must be remembering that incident from the 1992 Cricket World Cup. Thankfully, the batsman, Kapil Gupta, didn't jump like Javed Miandad, and neither did the wicket keeper disturb him like Kiran More. But anyways, it's all healthily done. But don't disturb Javed Miandad much, because you know what he has done to Chetan Sharma. Oh, short ball. This might be a wicket. The fielder keeps on seeing the ball go towards for 2 runs. And there you go. He just gets its finish here. It's the Consul Mitron 11 in the red and the black, who seems to be in the qualifying angle, because now they have registered 2 out of 2 victories. And all the younger generation of the boys and the girls just goes on to the cricket field to hug probably their parents in there. One of them just picks up his daughter. It's so good to see, isn't it? The next generation is embracing the sport. And there you go, it's the Mitron 11 who have won by 9 wickets versus the IBM Media KVM Super Kings. And we'll be having the post-match presentation ceremony in some time.